Very good morning, students. Welcome to e-learning classes of business studies. Today in this lecture I am going to cover some case study questions of last topics of chapter 5, that is organizing. In my last lecture I have explained you delegation of authority, centralization, decentralization, formal informal organization, difference between delegation and decentralization, and importance of decentralization. In this lecture I am going to cover case study questions of all these topics. See question number 1 beta. Raghunath works as a human resource manager in Vanshika Housing Limited, a company engaged in the real estate business. He suggests to the managing director of the company to start a sports club in the office where friendly indoor matches can be organized amongst the employees on every Saturday. In context of the above case, identify the type of organization that Raghunath is desirous of promoting in the company. State any 3 advantages of the type of organization as identified in the part A of the question. Which type of organization structure is there बेटा? This is informal organization because कि क्या बोला है इसमें आपको देखो ये लाइन्स जो है आपके सबसे पहले बता रही है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कि रघुनाथ वर्क्स एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन वंशिका हाउसिंग लिमिटेड, our company engaged in the real estate business. He suggests to the managing director of the company to start a sports club in the office where friendly indoor matches can be organized amongst the employees on every Saturday. तो दिस शोज़ दैट इट इज़ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्योंकि हर सैटरडेज़ को कर रहे हैं, वीकेंड्स पे कर रहे हैं, सो दैट देयर मस्ट बी एन एंटरटेनमेंट अमंग द employees of the organization. It is informal organization structure because it is creating a psychosocial relationship among the employees of the organization in the sports club. ठीक है, और 3 एडवांटेजेस इसकी, तो एडवांटेजेस तो आप बुक से लिख लेंगे. तो एडवांटेजेस में आप इसके जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का साइको सोशल रिलेशनशिप है, आपका जो है मेंटल सेटिस्फेक्शन हो रहा है अमंग द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें दैट इज़ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विच शोज़ द फ्रेंडली रिलेशन अमंग द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Now see question number 2 beta. Srijan is working as a sales manager in a publishing house. In order to promote the new series of encyclopedias, the company decides to undertake door-to-door selling in the city. As the sales manager, Srijan is giving the target of selling 5,000 units in 1 month. He appoints a team of 5 salesmen for the purpose. Each salesman is given the target of selling 1,000 units. At the end of the month, only 4,800 units are sold as one of the salesmen. Bobby fall ill during the last week and is not able to sell he is able to sell only 800 units. In the context of the above case, will Srijan be still accountable for the performance of the assigned task to Bobby? Why or why not? Give a suitable reason to support your answer. See बेटा, एक आपका सेल्स मैनेजर है सृजन, जो जिसको टारगेट मिला था 5,000 यूनिट इन अ मंथ कंप्लीट कराने के. उसने 5 सेल्समैन अपॉइंट करे और ईच सेल्समैन को उसने टारगेट दे दिया कि 1,000 यूनिट उन्हें सेल करना है. लेकिन आपका 4,800 यूनिट एंड ऑफ द मंथ में कंप्लीट हो पाया क्योंकि एक जो उसका एम्प्लॉय था बॉबी, वो बीमार पड़ गया और उसने 800 यूनिट्स ही भी सेल कर पाई इंस्टीड ऑफ 1,000. तो क्या सृजन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? येस. मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी. तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी फॉलो होगा कि भले ही सृजन इज द मैनेजर ऑफ द कंपनी एंड ही हैज़ असाइन ड्यूटी टू बॉबी, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क असाइन कैन बी डेलीगेटेड और द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सुपीरियर इज एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी डेलीगेटेड. इट मीन्स आपके जो मैनेजर है सृजन, उसको टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए था कि वेदर द वर्क इज़ गोइंग टू परफॉर्म इन प्रॉपर मैनर और नॉट. या किसी एम्प्लॉय की तबीयत खराब हो गई थी तो वो उसका टास्क किसी और एम्प्लॉय से करवा लेता. It means thus irrespective of the extent of delegated authority, the manager shall still be accountable to the same extent as before delegation. ठीक है, मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज मैनेजर हैव टू चेक whether the task is going on in proper manner or not. Now see the next question. Rakesh joins as a head librarian of a newly constructed medical college in Pune. A team of 4 librarians is placed under him for the smooth functioning of the library. Besides, he has been assigned 8 people as support surface staff. On the second day of his joining, he is told to get a shipment of new books unloaded, stock the bookshelves, and then get all waste disposed of within a week time. In order to ensure orderliness and speed in the process of setting up of library, he makes each of the 4 librarians in charge of 5 different subjects. Keeping in mind their competence and experience, he decided to give them more authority so that they can make autonomous plans and assume the responsibility
for the effective implementation of their decisions. In the context of above case, identify and explain the concept used by Rakesh, keeping in mind the competence and experience of the other librarians. Describe briefly any three advantages of using the concept as identified in part A. See, कौन सा concept इसमें follow हो रहा है? राकेश ने जो concept follow करा है, that is Rakesh has used the concept of decentralization, keeping in mind the competence and experience of the other librarians. क्योंकि राकेश ने जो है आपका chain of command follow नहीं करा था, उसने अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था. इट मीन्स राकेश इज फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. थ्री एडवांटेजेस क्या है? नंबर 1, डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस and confidence among the subordinates. When the subordinates are given freedom to take their decisions, they need to depend on their own judgment and develop solutions for the various problems they encounter. Moreover, a decentralization policy helps to identify those executives who have the necessary potential to become dynamic leaders. ठीक है. नंबर 2, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट. और टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है, जब उसने अपने रूटीन डिसीजंस को ट्रांसफ़र कर दिया टू द सबऑर्डिनेट्स, देन दे आर फ्री टू टेक एनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. क्विक डिसीजन मेकिंग, बिकॉज यहाँ पे आपका स्टेप बाय स्टेप वर्क नहीं हो रहा है, बल्कि आपने अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया अमंग ऑल द लेवल्स. इट मीन्स आपका डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाता है और एरिया ऑफ डिसीजन भी आपका बढ़ जाता है. नाउ सी बेटा क्वेश्चन नंबर 4. Kabir opens a retail mart in a local market. As he knows it will be impossible for him to handle all work alone, he appoints Jasraj to perform tasks on his behalf, thereby reducing his workload. This decision provides Kabir with more time to concentrate on important matters. Besides, he recruits 8 other persons as support staff. Over the years, his business earns a good name for itself, so he opens another outlet in the city. Considering Jasraj's competence, he gives the independent charge of running the new outlet to him, thereby empowering him by giving him autonomy in functioning of the outlet. In the context of above case, identify 2 concepts which reflect the transition in the role of Jasraj in the above paragraph. What are the factors that Karan must keep while giving the independent charge of the new outlet to Jasraj? See beta, 2 फैक्टर्स इसमें कौन कौन से? एक तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन है. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इनिशियल जो बिजनेस स्टार्ट होते हैं इनिशियल ईयर्स में जसराज रोल इज रिस्ट्रिक्टेड. ही इज़ ग्रांटेड लिमिटेड अथॉरिटी टू परफॉर्म टास्क ऑन बिहाफ ऑफ कबीर to reduce his workload and provide him with more than time to concentrate on important matters. इनिशियली जो था जसराज को सिर्फ कबीर से अथॉरिटी मिली हुई थी, उतनी जितने में वो काम कर सकता था. इट मीन्स डेलीगेशन इज मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो इट इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. देन उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन हो गया ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज व्हेन जसराज इज गिवन एन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑन द न्यू आउटलेट, ही इम्पार्ट टू टेक डिसीजंस ऑटोनॉमसली टू इंश्योर सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द आउटलेट. ठीक है. Karan need to be careful while selecting those decisions related to the outlet which will be taken by Jasraj independently and those that will be retained with him. It is important to define the decision making power, as complete decentralization would imply the delegation of all decision making functions. Jasraj and this would obviate Karan's role as the owner of the business. ठीक है. I hope you all understand. Do all these questions in your copy. Chapter number 5 has been completed. Organizing chapter has been completed. Do the assignments also. Thank you beta. Have a nice day.